أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear fellows, students, colleagues, young doctors, especially I am talking with the new graduates, young doctors, youths, that you have already learned about the shock. The shock should be covered by every angle, not mean physiology, biochemistry, pathophysiology, pathogenesis, the clinical manifestations, the relevant investigations, and the management strategies and recent advances. Because you have to come across with this. Either you are taking in future as medicine analyte or surgical analyte. It is a main problem in accident and emergency department or emergencies and ICUs, in CCUs, etc. Or even at your home. You don't know. So I am Professor S. Ali Hazar. I am visiting professor of medicine at JSMU. Because this subject is important, it will be covered in 7 sessions. If I took all of them in one sitting, it will definitely fatigue you and you cannot understand what I want to say. These are the messages which I am transferring from my about 45 years of experience in clinics. So this is a true story actually. Recent story. It is 5 December 22 at Major Tertiary Government Hospital, Karachi. Major Tertiary Teaching Hospital. A 34-year-old female who developed fever for the last 18 days noticed abdominal distension and diffuse abdominal pain. The OPD medical officer advised treatment and the lab tests. At that time, when she attended the OPD, she took the drugs from that unit of the government, but avoid investigation due to the cost effectiveness because they are not available and there are heavy rush at the lab. She avoided. Then she was on the drugs. She developed unbearable diffuse abdominal pain and admitted in the A&E of the government leading tertiary care hospital. Look my word, leading government leading tertiary hospital, teaching hospital it is. Due to the heavy burden in the emergency department, of course, it should be an unavailability of CMO at that time because he was busy at that time. House officer examined her. There are many CMOs at that time. Chief casualty medical officer is in charge of the session, and there are CMOs which are called RMOs at A&E. There are 3 or 4 in number. I don't know exactly. At my time, when I was doing my house job, there was only 2. One is chief, one is assistant. And nowadays, I think it is more than 3 to 4 one session. Now, house officers were appointed actually at that time, every unit. They have to do this A&E department for 1 month. The house officer who was present, examined her. At that time, the temperature is 102 degree Fahrenheit, pulse very low volume, but it is 122 per minute.
BP is 60 by 36, severely dehydrated, and Glasgow Coma scale was 10 by 15, means she is drowsy. Abdomen, board-like rigidity with tenderness. You cannot examine the abdomen properly because of the tenderness and board-like rigidity, and gut sound not audible in all areas of abdomen. So it seems to be a surgical, definitely, emergency, whatever it is. छोड़ें इसको. CBC at that time was hemoglobin 8 gram %. It can be done very easily. TLC is 20,900. Neutrophils 82%. Lymphocyte 14%. Eosinophil was 0. And platelet was 600,000. Now here she is anemic. She was anemic. There is the neutrophil leukocytosis with relative lymphocytopenia. Eosinophils 0, monocytes hardly 1%. And there is platelet which is 600,000. It is reactive thrombocytosis, severe reactive thrombocytosis, because of the reduction of hemoglobin on the one hand, and on the other hand, the leukocytosis. It is an acute phase reactant. So it is an acute phase reactant here also. देखिए किस तरह मिलाया मैं ये देख रहे हैं. Random blood sugar was 80. It's all right, no problem. And sodium was 128. She has hyponatremia. Potassium is 3.2, hypokalemia. Chloride is 90, hyperchloremia. And bicarbonate was 32. It is metabolic type of acidosis. No metabolic type of alkalosis. Because if it is less than 22, it is metabolic acidosis. If it is more than 27, it is metabolic alkalosis, because the problem is going in the abdomen, not in the respiratory tract. It will be compensated by respiratory tract because it is alkalosis. So carbon dioxide should be retained to form more carbonic acid. It will be compensated like this. They have not done the ABG here because there is definitely heavy rush going on. X-ray plain abdomen was done and presented now in front of you. Now report this X-ray. Now this was the case. Report it. It is a standing X-ray, plain abdomen. Lot of gas formations are seen. Look, the small bowel. These are the small bowel. And here the houstations. Houstations are seen in colon. A lot of gases are collected. You see here? And what is this? This is a liver. It is definitely enlarged, seems to be enlarged here. And there is a lot of collection of gases here. So there is transverse colon which is going on, and the ascending colon which is there, and the loops of the small intestine. Here, houstations are visible. So this is transverse colon, this is the ascending colon. It is going like this. Look the fluid levels. If you see the fluid levels, 3 fluid levels are normal usually, because at the pylorus, at the upper part of the stomach, at the what is called ileocecal junction, maybe possibility at the right and on the left type of the colon is possible, and fluid levels can be presented at the sigmoid junction also. In constipated patients and other patients, it's possible. More than that is abnormal. Fluid levels should not be seen. Although there are less fluid levels, you can see here, if you count it, it is like 3 or 4.
But the important thing is this gas under the right dome of the diaphragm. This means that some air is excreted out from the gut, most possibly, according to the history which was taken. The easy to understand this X-ray, and this is definitely a perforation in some part of the GI tract. So she definitely diagnosed this condition as acute emergency and a surgical emergency. Now, the present house officer who was attending continuously her secured 2 lifelines. She gave oxygen, etc., administered fluids, steroids, inotropic agents with available antibiotics at that time. For example, augmentin was present, gentamicin was present. After insertion of the NG2 was inserted and suction started. This is a correct method, done correctly. What is available should be done. You have to remove this shock. She repeatedly called CMO because CMO or Chief CCMO was present, but actually they were so busy in cases that they only can tell her about the management point of view. And they have also called the surgical team because it's a surgical emergency. But I don't know what is the reason, some reasons, they were not available or not able to attend this emergency. This house officer tried all measures and she recalled from the final tutorials, measures recalled from the final tutorials which she obtained during her final year MBBS, either lectures or at the postings. But the patient died after 10 hours of her admission in hospital. She was admitted around about, say, 9 o'clock. And she died at around 9 o'clock, in 12 hours, 10 to 12 hours. And इसके बाद क्या होता है कि उसको चादर उड़ा देते हैं आप और ज़ाहिर है आप क्या करेंगे, BLS करेंगे आप इसका सर्वाइवल देने के लिए, सर्वाइवल थेरेपी जो कहलाती है, यही करेंगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने किया होगा। तो हाउस ऑफर में उसके बाद जो उसका काम किया था वो ये था कि हाउस ऑफर में डेथ सर्टिफिकेट उसने बना दिया। अब जाहिर है कि अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर किया था, वो पूरा हो गया और वो जो था हैंड कर दिया गया हर बॉडी को हस्बैंड, जिसके साथ बच्चे भी थे, माँ थी, वो हैंडेड ओवर her body to husband. This is the true story which I have told you. And it will be repeated and repeated and repeated in different sets in whole Pakistan. और उसका कोई जो है ना कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार भी नहीं है। टाइम पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। क्वेश्चन यही है कि व्हाट कुड बी दी प्राइमरी डायग्नोसिस। जब आपके पास आया था केस तो आपने उसके पास पुरानी पर्ची मौजूद थी, प्रिस्क्रिप्शन मौजूद था, जो भी पॉइंट्स लिखे थे उसने OPD वाले ने उसके बाद मौजूद थे। आपने एग्जामिन भी कर दिया है, आपने बेसिक डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन भी करा ली है, लाइफ लाइन लगा के। प्राइमरी डायग्नोसिस जिसकी वजह से परफोरेशन हुआ, इसका परफोरेशन तो है ही, ठीक बात है। तो प्राइमरी डायग्नोसिस इसकी क्या है? प्राइमरी डायग्नोसिस ये कि बड़ी क्लासिकल केस है। अगर आपने पढ़ा होगा इंटेरिक फीवर को, तो एट द एंड ऑफ द 3rd वीक जो होता है वो अगर मैनेजमेंट सही ना हो तो 2 उसकी कॉम्प्लिकेशन है एंटेरिक फीवर की। एक तो है हेमरेज, उसके बारे में तो एविडेंस में नहीं पता, लेकिन पॉसिबली है, इतना हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो गया पॉसिबली। और सेकेंडली जो है ना, इसके अलावा जो है वो दूसरी जो है वो है परफोरेशन। तो एंटेरिक फीवर का जो परफोरेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि उसकी जो एंटेरिक फीवर को समझें, याद रखिए
एंटेरिक फीवर जो है अभी भी मसला बना हुआ है, बिकॉज ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। परफोरेशन तक नौबत नहीं पहुंचनी चाहिए थी, इसको मैनेजमेंट हो जाना चाहिए था। परफोरेशन अगर यहाँ पे हुआ है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है डेफिनेटली, और उसने क्या किया है कि पेरिटोनाइटिस कर दिया है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस कर दिया पेशेंट, और उससे बाहर निकलने का जो है ज़ाहिर है कोई तरीका कार होगा, वो उन्होंने किया भी है। ये तो हो गई जो प्राइमरी डायग्नोसिस की। और उसके बाद जो इफेक्ट्स इसके आए हैं बॉडी के ऊपर इन परफोरेशन के, देखिए परफोरेशन कहाँ कहाँ हो सकता था। स्टमक में होता है बिकॉज ऑफ रीजंस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बिकॉज ऑफ द रीजन यू हैव जस्ट अभी भी देखा आपने। कोलोन में हो सकता है, वो भी आपको वजह मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन सूडोमोनास कोलाइटिस, इन कार्सिनोमा ऑफ द कोलोन, इन केसेस ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ द कोलोन एसेट्रा। और ट्रॉमाटिक जो है वो परफोरेशन में तो अलग चीज़ है, वो भी होता है। व्हाट कुड बी डन व्हेन शी फर्स्ट अटेंडेड, जब ओपीडी में गई थी तो फिर एमओ को क्या करना चाहिए था? एमओ को बताना चाहिए था कि तुम्हें प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, और इन्वेस्टिगेशन लाजमी तौर पे वो कराए, या एडमिट कर लेना चाहिए था कि उस वक्त तक जो है वो 2 वीक्स के करीब हो गए थे फीवर को, तो प्रोलॉन्ग फीवर तो हो गया था, तो उसको घर जाने से बेहतर ये था कि उसको रख के इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए था। वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। फिर व्हाट कुड बी द पॉसिबल पैथोजेनेसिस बिहाइंड दिस एंटीमाइस? पॉसिबल पैथोजेनेसिस ये है कि साल्मोनेला टाइफाई इन्वॉल्व है, जिसको एंटेरिक फीवर कहते हैं। इट मे बी पैराटाइफाइड फीवर, इट मे बी, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। और उसका एक क्लासिकल जो है ना, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में पूरी की पूरी पैथोजेनेसिस के साथ क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी है। पैथोजेनेसिस वही है जो एंटेरिक फीवर की, और उसका एंड रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, सेंट डिमाइस, इंतकाल हो गया उसका, उसका वक्त आ गया था। माननीय बात, हमारी कोताही हुई है इसमें। कहाँ पे? जब वो दाखिल हुई थी, वहाँ पे आई थी, तो ओपीडी का जो भी अटेंड कर रहा था उसको समझाना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है, ये एडमिट कर लेना चाहिए था। तो पैथोजेनेसिस जो है एंटेरिक फीवर की पूरी ज़ाहिर इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता मैं, क्योंकि टाइम का मसला आता है, लेकिन आपको आती है ये बात और आप समझते हैं कि व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशन कुड बी डन विच कैन हेल्प मैनेजमेंट। इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन में आपने कराई हैं, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स आप करवा लें, और ABGs आपको करवानी चाहिए, देखना चाहिए। उसको भी ज़ाहिर मैनेज नहीं करेंगे तो पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी, विशेष साइकिल डेवलप हो जाएगी। ये सारी इन्वेस्टिगेशन इसके साथ जो है ना, अब ज़्यादा फैंसी इन्वेस्टिगेशन तो आप नहीं करा सकते। हाँ, ये कर सकते थे, एक्स चेस्ट आप करवा लेते, वो हेल्पफुल हो जाती। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि इसको कराते भी अगर आप, ज़्यादा वो इसलिए कराते कि आप इसको मैनेज करना चाहते हैं कि इसको जब तक के सर्जिकल टीम पे हैंड ओवर ना कर दें। तो हु वाज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नर सेल्फ डिमाइस? आपके वो ऑप्शन है, नंबर ए ये है हाउस ऑफिसर की जिम्मेदार है इसका, नंबर 2 वहाँ RMO जिम्मेदार है, नंबर 3 CMO जिम्मेदार है, ठीक है ना, नंबर 4 जो जिम्मेदारी है वो मरीज़ की अपनी जिम्मेदारी है, हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और 5th ऑप्शन ये है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, हमने पढ़ाया है लोगों को, समझाया है लोगों को, टीचिंग का काम किया है, तो फिर हमारी टीचिंग तो बेकार हो गई। तो हमारे RMO भी हमारे ही ट्रेन किए हुए थे जो हमने भेजे थे यहाँ, हाउस ऑफिसर भी हमारे थे, इवन हो सकता है CMOs वगैरह भी हमारे ही हों, क्योंकि मैं JPM यहाँ JSM में आ रहा हूँ 2016 से, पॉसिबिलिटी है कि वो भी हो, हमें नहीं पता। लेकिन इसके बिहाइंड जो सीन में आदमी है वो मैं हूँ,
टीचर है ना भाई। 5 में से जो है ना, जो रिस्पॉन्सिबल तरीन बंदा है वो है जिसने ट्रेन किया है। ट्रेनिंग की लैकिंग है, ट्रेन नहीं किया कि हाउस ऑफिसर को ट्रेन अगर आप अच्छा करते थे तो वो खुद ही मैनेज कर देती। आरएमओ को अच्छा मैनेज करते तो वो 4-4, 5-5 मरीज एक साथ संभाल लेता। सीएमओ जो था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस मरीज को आके खुद देखता और जोर लगाता कि उसके पास बहुत पावर होती है। सीएमओ की पावर बहुत ज़्यादा है, इक्विवेलेंट टू एमएस होती है। जब एमएस नहीं होता सीट पर तो जो सेकंड रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना बड़ा है जिना या जितना बड़ा है जो सिविल हॉस्पिटल, या इतना बड़ा है अब्बासी शहीद, ये तो मैं नाम ले रहा हूँ ना आपको, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के। उनके जो स्टूडेंट वगैरह जो हैं, जो आगे आए हैं, वो हमने पढ़ाए हैं या हमारे साथियों ने पढ़ाए हैं ना। ट्यूटोरियल्स हमने दिए हैं, पढ़ाया हमने, सिखाया हमने, तो हम जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी थी और इसीलिए ये लेक्चर लिए जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसी राह रवे मंजिल ही नहीं। भाई हमारा काम तो बताना है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना आप किसी को सिखाने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है ना, ये पेशेंट जो है ना आपके पास आया शौक में, बिहाइंड द सीन कहानी कुछ भी हो, हमें इससे कोई बहस ही नहीं। तो शॉक एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड पैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट शुड बी नोन बाय एवरी क्लिनिशियन, वेदर उसका रैंक जो है हाउस ऑफिसर का हो, मेडिकल ऑफिसर का हो, आरएमओ का हो, सीएमओ का हो, सीसीएमओ का हो, कंसल्टेंट का हो। इसको पता होना चाहिए कि शॉक क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये उसको आना चाहिए। और हर आदमी जो इसको अटेंड कर रहा है तो उसको डीएलएस पर अबूर हासिल होना चाहिए और एसीएलएस पर भी अबूर हासिल होना चाहिए, वरना वो अटेंड कैसे कर रहा है, ए एंड ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले रहा है जब उसको बीएलएस नहीं आता, एसीएलएस नहीं आता। जो एम्बुलेंस, जो अमेरिकन एम्बुलेंस में जाए और यूके के एम्बुलेंस में जाए तो उनको आता है, ये वो कर लेते हैं मैनेज, उनके ड्राइवर मैनेज कर लेते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारी लैकिंग जो आती है वो ये होता है, हम हैं लाइब्रेरी बाउंड और हम शॉर्टकट पसंद करते हैं कि हमें थोड़ा सा बस आप गाइडलाइन दे दें, बाकी हम वो संभाल लेंगे। भाई ये आप संभालते तो ये इस पेशेंट की डेथ क्यों हो गई, नहीं संभाला ना। इसलिए जो है ना ये चीज़ जो है ना, इसको इस पर टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा के समझिए कि ये इसको अगर आपके सामने आ गया है एक पेशेंट जिसका पेरिफेरल परफ्यूजन जो है वो बहुत वीक है, वो वजह कोई भी हो पीछे, ज़्यादा बीपी बहुत लोअर होगा उसका और पल्स जो होगी वो फीबल होगी, इसकी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी, वो डिहाइड्रेटेड होगा, वो जो है टैकेपनिया भी हो सकता है उसको, और ब्रेथलेस भी हो सकता है पेशेंट। वो किसी भी तरह से जो है ना वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। और असल मसला जो है ना सेंट्रल सिम्टम्स है, जब ब्लड नहीं जाएगा ब्रेन में तो ट्रांस सेरेब्रल परफ्यूजन नहीं होगी तो ग्लास का कोमा स्केल गिर जाएगा। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इस कंडीशन में जो हाइपरटेंशन हुआ, एक तरफ तो ब्रेन, दूसरी तरफ हार्ट, तीसरी तरफ किडनी, और तीनों के तीनों जो है लाइफ यानी इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो फिर वो कैसे काम करेंगे, ये मुझे बताएं। शॉक की वजह कोई भी हो, अंडरलाइंग उसकी बात नहीं हो रही, शॉक तो शॉक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए जो इस लेक्चर में दी जा रही है वो ये कि शॉक शुड बी मैनेज्ड फर्स्ट इन A&E। आप इसको ट्रांसफ़र नहीं करें किसी दूसरे वार्ड में बिफोर शिफ्टिंग टू द वार्ड और आईसीयू। पहले शॉक को से निकालें मरीज़ को, तब ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करेंगे ज़्यादा स्ट्रेचर पे डालेंगे, वो चलाएगा, वो लेके जाएगा, उसको 5 मिनट लग जाएंगे, उसके दौरान डेथ हो जाएगी उसकी।
कि 5 मिनट्स अगर आप ब्रेन को ब्लड ना दें, ज़ाहिर आपको पता है क्या होगा, सेरेब्रल इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरह हार्ट में भी है, आप ब्लड नहीं गया वो चला जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, और इसी तरह रीनल फेलियर में चला जाएगा, एक्यूट सीवियर एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें जैसे क्या करते हैं कि शॉक को पहले मैनेज कर देते हैं, इतना कर देते हैं कि बीपी को 90 तक ले आए, सिस्टोलिक को पल्स इतनी हो कि आप पेट कर सकें, कैरोटिड पल्सेशन आपको नज़र आ रही हो, और ग्लासगो कोमा स्केल जो है उसका वो कम से कम 12-13 होना चाहिए कि वो अपनी हिस्ट्री दे रही है, अपने मुंह से बात कर रही है, पहचान रही है कि पेशेंट जिसकी बात हो रही थी। इसका तो 10 था। 10 का मतलब यह है कि वो ड्राउजी है, बहुत सीवियर ड्राउजी है, बिकॉज ऑफ द हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। तो ये जो पार्ट मैंने अभी बताया है, ये सिर्फ जो है ना आपको जगाने के लिए बताया। शॉक को जो है ना मैनेज, उसकी टाइप क्या होती है, क्यों हुआ था, बिहाइंड द सीन क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे मैनेज करते हैं। आप क्लासीफाई कर लें, अगर कर देंगे तो मैनेज भी कर लेंगे। जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि ये स्टेज आई कैसे। जब तक आप ये नहीं पकड़ेंगे तो ये मैनेज नहीं हो पाएगा। मसला ये है कि जब तक शॉक मैनेज नहीं होगा वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। ये रूल है, ये लॉ है, ये एथिक्स है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो, क्योंकि ये सेशन वाइज दे रहा हूँ मैं। सेशन 1 मैंने अभी बताया, फिर सेशन 2 है, फिर 3 है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसको समझिए। इन द एंड इसकी समरी आपको बता दी जाएगी, और फिर आपकी बात समझ में आ जाएगा कि आप पे जिम्मेदारी अगर डाली गई थी तो फिर आपको उसको मैनेज करना चाहिए था। उम्मीद है कि ये जो शॉर्ट टॉक है आपकी लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।